of Delhi High Court and Supreme Court, and also worked as legal associate with United Lakes for international constructions project in legal document verifications profile. She has also worked for NEET Limited and currently associated with IT industries, educational institutions, retail industries, NGOs, etc. She is currently working as self-practice at Pay.Professionals. Ma'am is expertise in agreement drafting and vetting, HR policy formulation, legal drafting, legal opinion, company affairs, labor issue management, commercial legal services, intellectual property rights, problem analysis and solution, etc. Ma'am having membership for the Bar Council of Delhi, also having member of Delhi High Court Bar Associations. Ma'am has cleared All India Bar Association exam also. Ma'am having the LLB from University Law College, Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. She has also cleared MCOM from IGNOU Delhi, and she is also doing PGDIPR from IGNOU. Ma'am provided advice to the chief executive and the executive leadership team across the range of the department legal interest, risk and obligations, contributed to a legality assurance perspective of the department strategy and governance process, particularly the executive decisions making process. Ma'am handles several cases under the preparing statements of claim, replies, rejoinders, evidence, written argument for dispute like complex commercial deals, labor conflict, etc. Welcome you, ma'am, for your gracious presence. Thank you. Thank you so much. Today in this FDP session, yes, thank you. Today in this FDP session, ma'am will throw light on prior art search and resources. I would like to request Advocate Sandigdha Misra ma'am to address the session. Participants are requested to put your questions they have in the chat box during the presentations. Welcome you, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you. A very good morning and heartiest thanks to the authorities of Jharkhand Rai University, the organizers for inviting me and giving me the opportunity to share my experience and understanding of intellectual property rights for the topic prior art search and resources for patent filing. Also, a very good morning to the fellow participants. JRU has already introduced me, so I have majorly experience in company legal matters, which includes IP law, contract law, tax law, and other corporate related legal matters. Okay, so today's session is prior art search and resources. This is from intellectual property law. So before we proceed, I just want to explain what is intellectual property right. Intellectual property right is the right resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, and artistic work. There are majorly 4 intellectual properties: patents, trademarks, copyright, trade secrets. Other intellectual properties are like trade dress, designs, and all. So trademarks refers to a recognizable sign, word, or symbol that denotes a specific product and legally differentiate it from all other products of its kind. तो गाइस अगर मैं हिंदी बोलूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो ना किसी को? Please give thumbs up because I will use Hindi as well as English. तो ट्रेडमार्क जैसे आप लोगों को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो होता है, एनआईटी लिमिटेड का लोगो होता है. दीज आर देयर ट्रेडमार्क. जो भी प्रोडक्ट होता है लाइक साइकिल, अगरबत्ती, उनका एक लोगो होता है. दे हैव ट्रेडमार्क. सिमिलरली copyright is the right to copy. It refers to the monopoly approved to or
authors by copyright law for exclusive use or reproduction. So for this copyright, हम एक interesting example लेंगे like movies, because movies हम सबको interesting लगती है. So like हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, ये वाला, ये this is an example of copyright law. Dhoom Dhoom 2, Dabang Dabang 2. So let's see which is not an advantage of copyright. I have 4 options A, B, C, D. अगर आपको आंसर पता हो ना, then please mention in the chat box the option. Copyright protection. Once again, I am repeating the question. Which one is not an advantage of registering a copyright? Copyright protection creates a public record of the ownership by the copyright holder. Copyright protection enables creators to consequently be rewarded for their originality and venture. To claim and acquire copyright. Copyright protection enables the holder of the copyright to take legal action against the infringers. So, इसका आंसर जो है, this is C, to claim and acquire copyright, because it's a process. Let me share my screen. Just a minute. Let me share my screen. Yeah, it's visible, ma'am. Is it visible to all? Yes, ma'am. So the answer is to claim and acquire copyright, because it's a process. It's a process of the term copyright protection refers to the monopoly approved to the authors by copyright law for exclusive use or reproduction. The copyright protection creates a public record of the ownership by the copyright holder, and it helps in claim and acquire copyright. So the next thing is, okay. So now we can come to patent, because intellectual property is very vast. मैं अगर सब में जाऊंगी तो हमें टाइम नहीं होगा, because we have 1 hour only. So what is patent? Patent is an exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides in general a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. For the patent, just a minute. Yeah, it is visible, ma'am. Yes, ma'am. So in today's session, we will cover what is prior art search related to patent, importance of prior art search, types of prior art search, how to search patent database, and search through WIPO, USPTO, Google Patents. And then we will try to resolve some of your questions if time allows.
Okay. So before going to what is prior art, as you all know, patent is an exclusive right granted for an invention. To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to public in a patent application. जो patent application हम फाइल करते हैं उसमें complete specification of our invention होता है, invention होता है, पूरा process होता है. So anyone has idea what is IPC? What is IPC? IPC is इंटरनेशनल पैटेंट क्लासिफिकेशन. पैटेंट का अगर एग्जांपल आप लोगे, लाइट बल्ब, ब्लूटूथ, ये सब चीजें जिन्होंने इन्वेंट करी थी उनके नाम पे है. अगर उनके नाम, सपोज उन्होंने पैटेंट अप्लाई नहीं किया होता तो नाम, काम किसी और का, नाम किसी और का होता. तो सब अभी कोई वैसे ही टेक्नोलॉजी एक इन्वेंट करना चाहे, फॉर एग्जांपल बल्ब इन्वेंट करना चाहे, तो प्रायर आर्ट सर्च उसमें क्या हेल्प कर सकता है? आप प्रायर आर्ट सर्च आपको ये हेल्प करता है, जो पर्टिकुलर इन्वेंशन है वो प्रीवियसली किसी ने बनाया तो नहीं. अगर प्रीवियसली बनाया है तो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है, क्या उसका बल्ब और आपका बल्ब डिफरेंट है? और अगर नहीं है तो प्रायर आर्ट सर्च के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. बिकॉज हर पैटेंट एप्लीकेशन में, हर इन्वेंशन में वी आर यूजिंग आवर नॉलेज और टाइम एंड मैन पावर, कॉस्ट, बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है. तो प्रायर आर्ट सर्च इसलिए हमें ये दिखाने के लिए कोशिश करता है कि समथिंग विच इज प्रायर, द आर्ट विच इज प्रायर और प्रीवियसली मेड. So for an invention to be patented, the criteria of novelty and non-obviousness have to be met. A prior art search is undertaken to ascertain whether an invention is new and non-obvious or not. Prior art search is dedicated search to figure if there exists any evidence that could deem a patent application invalid. Prior art searches include 3 types based on the purpose of the search. That is novelty search, invalidity search, FTO search. Novelty search, what is novelty? Novelty means which is new and unique. Non-obvious means which is absolutely not obvious, जो public को नहीं पता, जो हमारे obvious things में नहीं आते, which is new. And FTO search means freedom to operate, means जो हमने invention करा है उसके लिए हमें freedom है कि नहीं. Is it visible? PPT is visible, na? Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Visible, ma'am. So in Patent Act, there is no specific prior art term. कोई definition नहीं है prior art का. But in section 29, something refers to prior art, which was published before the claim of a completed specification in any specification filed for obtaining a patent in India on or after January 1, 1912 in India or elsewhere, and also in any other document. That is, we have to undertake certain process जिससे हम ये ascertain कर पाए जो हमारा invention है वो पहले तो नहीं था, वो new है कि नहीं. तो before the patent filing हमें ये ensure होना चाहिए. In this, I need to mention one thing. In India, prior art is not mandatory.
इट्स अ रिकमेंडेशन। प्रायर आर्ट कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं करोगे तब भी आप पैटेंट फाइल कर सकते हो। इट्स अ रिकमेंडेड टूल सो दैट आपके पैटेंट रिजेक्ट ना हो जाए। Prior art is a reference of some type in some form, textual, visual, audio, etc., which serves as clear proof that the invention you hold is not something unique. जैसे मैंने बोला कि अगर आप प्रायर आर्ट करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि इससे पहले ये चीज हुई है या नहीं, ये चीज इन्वेंट हुई है या नहीं। तो उससे पता चल जाता है कि नहीं, मेरी जो चीज है it is not something unique. It is evidence that your invention is already well known and not something unique. It is not important that prior art is present physically or is commercially available. It is enough that someone, somewhere, and at some time previously described, showed, or made something that contains the use of technology that is very similar to your invention. 100 to 100 मैच करना जरूरी नहीं होता। अगर ये भी होता है कि इस तरह का कोई इन्वेंशन है, देन ऑल्सो आपकी पैटेंट होल्ड पे चली जाती है। Many times we nurture an idea. Now we go through the importance of prior art search. Why we need prior art search? Many times we nurture an idea, however we are unable to protect it, as we at times do not understand or ignore the necessity of prior art search. Suppose I have invented something unique, but मैंने उसको पैटेंटाइज नहीं करा। उसी चीज को किसी और ने इन्वेंट करा और उसने अपने नाम पे कर लिया, तो जो बेनिफिट्स है उसके साथ तो वो उसको मिलेगा। मुझे, मैंने अगर करा है और मैंने अपने पास रख लिया है उसे, तो उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। उसका बेनिफिट उसे ही मिलेगा जिसने उसको अप्लाई करा है लीगल ओनरशिप के लिए। तो पैटेंट आपको उस इन्वेंशन का लीगल ओनरशिप देता है। To protect your idea, the idea needs to qualify as patentable. It should have industrial applicability, should be novel and non-obvious. To identify whether the idea is novel and non-obvious, prior art search become a necessity. These are preconditions for an idea to be patentable. I have already explained this, so I don't think कि मुझे ज़्यादा कुछ इस पे बोलने की ज़रूरत है। An exhaustive prior art searches provide insight into the literature with similar innovation that exists and fits within a broad field of study, or making it obvious. Novelty, which means that the invention is new and has not been published anywhere. It is the most important one. Novelty is most important one, क्योंकि यही आपको ये first criteria है for patent, for applying patent. Novelty जरूर होना चाहिए. Innovators must determine the novelty of their invention before filing patent application. It needs carrying out prior art searches that show all the existing prior arts related to their invention. जो आपका इन्वेंशन है वो आगे किसी ने करा है। सॉरी, इज इट ऑडिबल? Yes, ma'am. It is audible, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Prior art searches can be used to generate ideas for research and development. Also, one may avoid duplication of research, reduce R&D investment significantly, develop new technical solution to problems. Prior art searches में ये भी हमें पता चल जाता है कि जो सिमिलर रिसर्च है उसके आइडियाज कैसे थे, उसका इन्वेंशन कैसा था, क्योंकि जो पैटेंट
डेटाबेस जब मैं वो स्लाइड आपको दिखाऊंगी उसमें कंप्लीट डिटेल होता है अबाउट द इन्वेंशन, अबाउट द प्रोसेसेस। तो प्रायर आर्ट सर्चेस से ये भी हो जाता है कि जो इन्वेंटर है उसको आइडिया मिल जाता है कि वो अपने इन्वेंशन को और कितना एनहांस कर सके ताकि वो यूनिक बने, क्योंकि अगर सिमिलर इन्वेंशन होगा तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यूनिकनेस और एनहांसमेंट के लिए भी हम प्रायर आर्ट सर्च कर सकते हैं। Then it helps to find legal status of patent application, keep abreast of new technological trends, monitor competitors' research activity. Okay, now types of prior art searches. Prior art searches take 4 forms: novelty, validity, clearance, and landscape searching. Sorry. A novelty search helps an inventor to determine if the invention is novel before the inventor commits the resources necessary to obtain a patent, and is done before an inventor files a patent application. This I have already explained. Novelty and prior art search. तो novelty search में क्या होता है, ये हमें पता चलता है कि this is a new idea, this is a completely unique idea. Then validity search. Validity search is done after patent issues, the purpose of which is to find prior art that the patent office overlooked. These can be useful for competitors looking to contest the validity of a granted patent. Validity search क्या होता है? Suppose एक already patent है, but that is not valid, that is not correct, there is something not genuine in that research or in that detail. तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, माई इन्वेंशन इज मोर जेन्युइन दैन द प्रीवियस द ग्रांटेड वन, तो इसीलिए वैलिडिटी सर्च करा जाता है. Then clearance search is a search of issued patent to see if a given product or process violates someone else existing or pending patent. Clearance search क्या होता है? Patent is cleared or not. Lastly, landscape search. Landscape search provides a high-level view of the technology space and is normally performed to understand the lay of the land, the gravity of the research, the broader picture of the research when entering a new technological area, including recent trends in technology, competitors, research, filing activity, and the adjacent and white space technology. जो ब्रॉडर व्यू होता है वो हमें लैंडस्केप सर्च में पता चलता है. इट्स अ कंप्लीट एनालिटिकल सर्च. हाउ इज प्रायर आर्ट सर्च डन? ओके, प्रायर आर्ट सर्च कैन बी डन थ्रू 4 phases. शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कीवर्ड्स, exhaustive search of databases, extensive internet-based search, analysis and interpretation of search results. शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कीवर्ड क्या होता है कि अगर मुझे सपोज एक ब्लूटूथ का पैटेंट है, मैंने एक नया यूनिक ब्लूटूथ आइडिया हमने करा है और हमको उसको पैटेंट करना है. Am I audible? Someone has written my voice is low. Am I audible? Yes, audible, ma'am. Okay. So first is shortlisting of keyword. तो शॉर्ट लिस्टिंग क्या करूं? अगर सपोज ब्लूटूथ का करना है तो मैं शॉर्ट लिस्ट सब कुछ वर्ड्स कर दूंगी इस टेक्नोलॉजी को लेके, लाइक ब्लूटूथ, कंप्यूटर, डेटा ट्रांसफर. इन वर्ड्स से मैं सर्च करूंगी कौन से पैटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उनके डिटेल्स क्या हैं. उस डिटेल्स को मैं अपने इन्वेंशन के साथ कंपेयर करूंगी. एग्जॉस्टिव सर्च, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस मतलब जो प्रायर आर्ट सर्च के लिए जो आईपी डेटाबेसेस हैं
उन पे मैं सर्च करूंगी कि मेरे रिलेटेड इन्वेंशंस क्या क्या हैं, है नहीं है। देन एक्सटेंसिव इंटरनेट बेस्ड सर्च। आजकल हम हर चीज के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम गूगल कर लेते हैं। कोई भी आप वेब ब्राउजर खोल लो और उसमें एक सेंटेंस डाल दो, आपको उसके लिए 1000 रिसर्च मिल जाएंगे। तो एक्सटेंसिव इंटरनेट बेस्ड सर्च क्या होता है कि हम पूरे इंटरनेट को छान ले कि इस तरह का कुछ है या नहीं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्च रिजल्ट। हमें बहुत सारे सर्च मिल गए, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। तो अ competent person और लीगली क्वालिफाइड पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट, जिसको नॉलेज हो। क्योंकि एनालिसिस ऑफ सर्च एंड जिसका इन्वेंशन हो, जो रिलेटेड, सपोज इट्स अ साइंटिफिक इन्वेंशन, तो जिसका साइंटिफिक सब्जेक्ट पे, कोर सब्जेक्ट पे नॉलेज हो, वो उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है। तो इन माय ओपिनियन, आईपी इज नॉट ओनली फॉर द लीगल स्टूडेंट। आईपी में बहुत कुछ होता है जिसमें हम बहुत सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं और सबकी एनालिसिस को हम कंसिडर करते हैं, बिकॉज देयर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Novelty and validity or invalidity search. These involve both patent literature and non-patent literature. Okay, patent literature और non-patent literature क्या होता है? Patent literature होता है complete data and research of the patent that are confirmed and available. Non-patent literature क्या होता है कि उसके डिटेल्स हैं, पब्लिक डोमेन में उसके पूरे रिसर्च हैं, बट द पैटेंट इज नॉट कंफर्म्ड येट, और वो होल्ड पे है, पेंडिंग में है। तो पैटेंट लिटरेचर और नॉन पैटेंट लिटरेचर ये होता है, इनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। While novelty searches are performed for the purpose of filing a patent application, validity and invalidity searches are performed to check or challenge the validity of a patent or application. FTO searches, as I have already explained in my previous slide, these involve legally active patent literature searches and analyze them based on specific geographic region. उस रीजन में, सपोज मैंने अभी इंडिया में एक पैटेंट लिया, तो एफटीओ सर्च मुझे ये बताएगा कि इंडिया में मैं इसे ऑपरेट कर सकती हूँ कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर उसी रीजन में ऑपरेट हो सकता है कि नहीं। For this thing, we need to do the FTO search. The searches are performed to determine the clearance of a technology or product in a market. Infringement searches. These comprise searching and analyzing non-patent literature to identify patent infringements by third parties. So now, how is a prior art search done? हमें टाइप्स पता चल गया, इंपॉर्टेंस पता चल गया। Prior art searches done through landscape and state of art searches. These searches deal with both patent and non-patent literature search to understand the existing state of a given technology. Landscape I have already told you, so I don't think there is more elaboration needed. Chemical structure searches. These searches are focused on finding similarities between chemical structure of innovation, chemical compounds whose IUPAC names have not been disclosed. केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्योंकि इनके बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, तो वी हैव, उसका स्ट्रक्चर सर्च पूरा अलग होता है। देन बायोलॉजिकल सीक्वेंस सर्च, जैसे केमिकल स्ट्रक्चर सर्च will provide the chemical compound, chemical combinations. Similarly, biological sequence search में क्या होता है, are performed to identify the
nucleic acid or protein sequences disclosed in a prior art document. बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस है, बायोलॉजिकल सीक्वेंस सर्च में पता चलता है. Additionally, all these searches include to analysis, which is used to guide strategic business decisions of companies regarding their intellectual property. Now comes to patent database. So patent databases में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? WIPO, World Intellectual Property Organization, USPTO, United States Patent and Trademark Office, Google Patents. These three we will cover in my today's presentation. Other patent databases are eSpace, European Patent Office Search Interface, InPass database. This is our Indian Patent Advanced Search System. UKIPO, United Kingdom Intellectual Property Office, Patent Link. Because we have less time, so we will cover the first three. The first, before go to the WIPO site, I just need to understand I think I have already explained USPTO, so you all know what is USPTO. Just a minute. It's United States Patent and Trademark Office. So let's go to USPTO first. This is a patent database. For that, I have to go to the web browser. Is it visible to all? USPTO? Yes, ma'am, it is visible. So, yeah, visible, ma'am. पैटर्न हम स्टैंडर्ड सर्च में कैसे सर्च करते हैं? Like I'm clicking here. This is the website. It is also written in my presentation. uspto.gov.patent/search. So suppose I'm clicking here on quick search. These are the fields: home, quick, advanced, patent number, help, view card. जो पेंडिंग पैटेंट्स होते हैं. सपोज मैंने अप्लाई करा है और पेंडिंग पैटेंट्स है. तो क्विक सर्च में सपोज आई एम राइटिंग Bluetooth and let's search. These are the Bluetooth related technology. And if you see here, the result of search in US patent collection DB for database for Bluetooth 140 patents. Suppose local and temporal method and system broadcasting via peer-to-peer network. Bluetooth is basically data transfer methodology. तो इसके लिए अगर हम एक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पैटेंट नंबर, इन्वेंटर्स डिटेल, एप्लीकेंट, सिटी,
application number, filing date, patent number, related US patent documents, references, and the claim, the invention claim. This is the complete detail, detail of the patent, the description. तो जब हम प्रायर आर्ट सर्च करते हैं किसी एक रिलेटेड टर्म को हम इसमें सर्च करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इन्वेंशन है वो कितना यूनिक है। सिमिलरली अगर मैं कोई प्रोडक्ट ना लेके, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ना लेके मैं किसी कंपनी का नाम लेती हूँ, तो लेट्स टेक एनआईटी। तो एनआईटी के नाम पे कितने कितने हैं? इफ एनआईटी रिलेटेड कोई है या नहीं है, तो सपोज आई एम क्लिकिंग हियर इको रिमूवल, तो ये जो फर्स्ट पैटेंट है वो वहां पे शो कर रहा है, दिस इज यूएस पैटेंट। Ma'am, can be enlarged so that it's more visible? This is not viewing, your this is in full screen mode, Low visibility. low visibility. Okay, just a minute. Uh, uh, can be enlarged so that it can be more Yeah, visible. sure. Yes. Yes. Is it visible now? No, ma'am. Visible, not visible. It is visible, but resolution may can enhance, ma'am. 71% to 100%. This is 125% Scroll the. right now. Right now it is 150%. Okay, okay. 175%. Visible? Yes, ma'am. Or should I make it 200%? Okay, okay. Visible, not visible? Visible, ma'am. लाइक जो प्रीवियसली मैंने दिखाया था, ब्लूटूथ जब था, ब्लूटूथ में जो रियल इन्वेंशन था उसका स्पेसिफिकेशन था और रिलेटेड इन्वेंशन था। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी का नाम एनआईटी देती हूँ, अदर रेफरेंसेस में एनआईटी आ रहा है कि एनआईटी के नाम पे भी इस तरह का इको रिमूवल कोई कॉन्सेप्ट का एक पैटेंट है। तो हम कंपनी वाइज भी ढूंढ सकते हैं। तो दिस इज फॉर क्विक सर्च। नाउ अगर हम एडवांस सर्च करें, तो एडवांस सर्च में मैं सपोज मैंने करा क्वेरी एलईडी बल्ब। आई एम टेकिंग सच एग्जांपल बिकॉज ये हमारे यूज टू टर्म्स है। तो एलईडी बल्ब ऐसा कोई चीज जो 1790 टू प्रेजेंट, ब्रॉडर टर्म लेते हैं, डेटाबेस में 1790 में भी कोई ऐसी चीज थी क्या जो एलईडी? नो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वैसे ही आजकल एक लाइक आई एम एसोसिएटेड विथ एजुकेशनल इंडस्ट्री, तो आजकल वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल वर्चुअल सेशंस आर मोर पॉपुलर। तो सिमिलरली एक चीज है मैथ लैब, जहाँ पे हम स्कूल के बच्चों को मैथ सिखाते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो मैथ लैब की टेक्नोलॉजी कोई फिक्स में मैं जाऊँ, क्वेरी
These are the technology related to MATLAB, method and system of assembling information. Is it visible? Yes, ma'am, it's visible, ma'am. Abstract is the method for assembling an information processing application. Includes inputting a plurality of component description, wherein each of the component description includes a graph pattern. So this is the complete specification of MATLAB. The inventors, the assignee, family ID, application number. It was filed on April 2, 2007. तो MATLAB हमने बहुत इंडिया में लेट करा, like 2014-15 MATLAB इंडिया में आया. उससे पहले this was already popular in US. तो similarly अभी हम वाइपो में भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं. जो भी हमें टर्म देना है, सपोज क्लोरोफॉर्म, तो कोई साइंटिफिक नाम देते हैं. सपोज वी विल टेक एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट के ऊपर जो भी इन्वेंशन है वो मैंने कीवर्ड एयरक्राफ्ट दिया, जो यहाँ पे नाउ वी आर सर्चिंग वाइपो गाइड. तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट मैंने दिया तो उसके रिलेटेड जो इन्वेंशंस हैं वो ये हैं. तो उससे हम ये पूरे उसके स्पेसिफिकेशंस हैं. सिमिलरली आप जो कीवर्ड दोगे ये आपको, जैसे यहाँ पे रेलेवेंस, पब्लिकेशन डेट, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, एप्लीकेशन डेट, इसके हिसाब से आपको, सपोज मैंने पब्लिकेशन डेट असेंडिंग कर दिया, तो ये 1910 की फर्स्ट इन्वेंशन है. जो फिलिप्स एंड फर्स्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने एक पैटेंट फाइल करी थी अपने इन्वेंशन, इंप्रूवमेंट रिलेटिंग टू द कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ विंग फ्लैप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. वैसे ही आप यहाँ पे पब्लिकेशन डेट वाइज कर सकते हो, इमेज के साथ कर सकते हो, सिंगल फैमिली मेंबर, ऑफिसेस, ये सारे सर्च टूल के साथ आप एक पैटर्न टर्म को सर्च कर सकते हो. नाउ वी विल, I have less time left, so let's go to the Google. This is Google patent. Google patent में similarly अगर मैं यहाँ पे, Ma'am, slide is not moving. slide is on the USPTO. Okay. Slide is on Okay. USPTO. How to access the? We are on the Google. Okay, ma'am. This is WIPO. How to access the WIPO database? This is the website link, and I have already explained WIPO. Then USPTO, ये भी हम कर चुके हैं. Now this is Google patent. Google patent में similarly हम suppose यहाँ पे Google patents में हम Bluetooth earphones, these are the inventions. तो ये अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, the most recommended tool is WIPO and USPTO. Google is also very popular, but Google का जो स्पेसिफिकेशन है वो हम लोगों को बेसिकली थोड़ा सा नैरो डाउन लगता है कंपेयर टू USPTO एंड WIPO.
लैंग्वेजेस यहाँ पे अगर उसका इन्वेंशन देखोगे, ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है, द इन्वेंशन डिस्क्लोजेस अ सिस्टम यूजिंग ब्लूटूथ हेडसेट फॉर डायलिंग व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड कंप्राइजिंग अ ब्लूटूथ ईयरफोन। ये उसका एब्स्ट्रैक्ट है। ये उसकी वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्लेम्स। गूगल में सर्च इंटरफेसेस कम है कंपेयर टू यूएसपीटीओ एंड वाइपो। पब्लिकेशन ये है रिलेटेड। तो व्हाट इज गूगल पैटेंट? गूगल पैटेंट को अगर सॉरी, व्हाट इज गूगल पैटेंट? गूगल पैटेंट इज ग्लोबल पैटेंट। ग्लोबली, जैसे गूगल का फुल फॉर्म है, गूगल पैटेंट इज refers to global patent. So I think पैटेंट सर्च करना इतना मुश्किल नहीं है फ्रॉम द डेटाबेस। उसको एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ टास्क है। आप सर्च करके रिलेटेड टर्म्स निकाल सकते हैं, बट उसके बाद, सर्च के बाद जो मेन टास्क है उसको एनालाइज करना, उससे ये आउटपुट निकालना कि योर इन्वेंशन इज यूनिक, दैट इज द मोर टफ टास्क। So let's conclude what we all have a gist of my session. So performing prior art searches before filing a patent application is crucial for innovators who are looking for patent protection. An exhaustive prior art search involves identifying all the relevant patent, non-patent literature to ensure that the invention is worth patenting. लाइक अगर हमने एक इन्वेंशन कर दिया, टाइम इन्वेस्ट कर दिया, बट हमें ये पता चला कि इन्वेंशन तो ऑलरेडी है, तो टाइम की बर्बादी है। तो ये असर्टेन करना बहुत जरूरी है कि द इन्वेंशन इज वर्थ पैटेंट। Despite the fact that pre-patent database allow anybody to conduct a patent search, it is important that a person skilled in conducting searches to given the task. पैटेंट हम कीवर्ड से पैटेंट डेटाबेस से निकाल तो सकते हैं, बट उसको एनालिसिस वही कर सकता है हु इज कॉम्पिटेंट टू डू दैट। बिकॉज अगर हमें मेथड पता है, हमें टेक्नोलॉजी पता है, तो हम निकाल तो सकते हैं, बट उसको एनालिसिस करने के लिए एक राइट पर्सन चाहिए हु हैव द नॉलेज। The reason being, patent searches involve tedious, repeated searching to various patent and non-patent literature. An unskilled person would not be able to do justice to the vast amount of literature to be searched. Furthermore, a skilled person understands the importance of claims of a patent to the claim, and the claims of a patent are of the utmost importance when a similar patent to your invention exists. In such case, one needs to analyze the patent claims to determine the degree of similarity between the two. तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, उसकी एनालिसिस ये असर्टेन कर देगी कितनी सिमिलैरिटी है, कितनी यूनिकनेस है, और वर्थ पैटेंटिंग है या नहीं। तो question answers which you have posted in the chat box, I think. Just a minute, let me. Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for such a Voice is breaking. Hello. informative session. And the participants ma'am, these questions, can I ask this question on the behalf of participants? Am I audible, ma'am?
Ma'am, am I audible? Yes, sir, you are audible, but her voice is not coming. Okay. Okay, sir. Ma'am, your voice is not coming. Shall I start few queries from the participants, ma'am? Your voice is not audible. Ashish sir, am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. I think there is Okay. some mic issue from her side. I think some technical. Yeah. Okay. Yeah. Yes. Ma'am, can you please unmute? Am I audible, ma'am? But your voice is not audible, ma'am. Participants, kindly stay connected. Ma'am, your voice is not audible, ma'am. Ma'am, just try to leave the meeting and join once again. Is there any technical issue with the same link? Yeah, you can just leave the meeting and you can rejoin the meeting. Yeah, okay, ma'am. Participants, kindly stay connected. I think there is some technical problem. Man will soon start the session of your few queries. And one announcement for the participants, after the sessions, kindly fill your feedback as well as assessments, as feedback link and assessment link is already there in the Moodle platform.
kindly stay connected with us. Ma'am will join in just couple of minutes. Is it audible now? Yes, ma'am. It is Thank you. audible, ma'am. Thank you. With your permission, can I, on behalf of participants, can I raise the questions of the participants, ma'am? Yeah, sure. Please go ahead. Yeah. One participant has asked, what are the difference between the simple search and waifu search? Sorry, come again. Your voice is What is the breaking. difference between simple search and what is the difference between simple search and waifu search? WIPO search gives you a world-based detailed patent information compared to the simple search. Simple search में क्या होता है, आपको हर तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगा और जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन भी नहीं हो सकता है, इसकी कोई स्पेसिफिकेशन, एप्लीकेशन आईडी, रिलेटेड ईयर्स, सारे इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे नहीं मिल सकते. तो वाइपो सर्च इज फॉर द डिटेल्ड सर्च. Okay. And next one is which one is better? One, novelty search, invalidity search, and FTU search. Sorry, come again. One question is that which one is the better search? Novelty search, invalidity search, and FTU search. If you are every searches has its own importance. If we are searching for a definite for a particular region, then FTO search is better. And if you are searching after patent filing, then invalidity search is better. Or if you are searching patent before filing, then loyalty search is important. Okay. Our next question is how to conduct prior art research in multilingual era, especially in copyright of books. In copyright era, you have to prior art in different, Especially in copyright of books. especially in copyright of books. Books, yes. In case of copyright of prior art search, basically for patent application. In case of copyright, if you are want to conduct the prior art search, then you need to access the database of copyright applications through the keywords and the related terms, so that you can extract the data related to the books. Okay, ma'am. Our next question is one participant has asked, suppose I prepared a composite slab and I have used 4 components for that. So Okay. that in that scenario, am I eligible for patent without having result analysis? No, without result analysis, because in the claim section, if you have noticed, the result, the outcome, the complete process is specified. So without result analysis, you can't apply for the patent. Okay. Our next question is, ma'am, is landscape search for only the technological field? No. Landscape search is for everything. If landscape search is a method we can use for every era. Okay. Next question is, slowly the world is opening up to the herbal remedies. Ayurveda has a lengthy history. How can any Ayurvedic formula having base in history to be authenticated for the patenting? Ayurvedic formula are very ancient. So there are very less chances कि ऐसे कोई invention पहले patented नहीं हुआ हो. Okay, ma'am. Yeah.
And one more question is there. I think this question is repeated. What are the difference between simple search and WIFO search? I think that is cleared by your side. You have asked that. Yeah, yeah. One more question is there, ma'am. If there is a patent protected technology whose owner is someone, if someone else does modification on it with prior permission of the owner, then will this modification applicable for filing as a new patent? Sorry, come again. Okay, ma'am. One question is that if there is a patent protected technology whose owner is someone, and Okay. if someone else does modification on it with prior permission of the owner, then will this modification or design applicable for filing as a new patent? In the presentation, I have the claim search. Like if your patent, your invention is more genuine to compared to the current invention which is patented, so you can file that in the IPC office for the modifications. बट ये मुझे ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि आप पैटेंट साइट में घुस के उसमें मॉडिफिकेशन करोगे स्पेसिफिकेशन में, या ये क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एक्चुअली. Okay. I think all participants has get their questions. So thank you very much, ma'am, for answering all the questions for the participants. I would like to summarize the topic discussed in this interactive session where ma'am has discussed on the what is prior art search, their importance of prior art search, types of the prior art search, such as novelty search, validity search, how is priority art search done, publicly available patent database for prior art search, WIFO, how to access the website, USPTO, how to access it, Google Patent, and how to access it. On behalf of Jharkhand Rai University and the entire team and my own behalf extend a very heartily vote of thanks to Advocate Sandigdha Mishra ma'am for gracious your important knowledge and sharing with us for your finding and opinion on today. It was indeed a privilege to have you as an expert, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. And participants are requested to submit the assessments and feedback form at the end of the sessions. These are available on the Moodle platforms. The one request from the participants, kindly stay connected. The next session will be sharply start at 2 p.m. on the topic practical applicability of the intellectual property rights, and our expert advocate Dirankar Sixer will take the session. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much.